So hello everyone, welcome to Cypher page, and today we are going to solve question number 1288 of Leetcode, that is remove covered intervals. Okay, हमें जितने भी covered intervals हैं उनको remove करना है. It is a medium level question. Let's read the question. Given an array intervals where intervals of I equals to Li and Ri represents an interval in the range inclusive of uh, this lower bound, and right, remove all intervals that are governed by another interval in the list. ठीक है, हमें ऐसे intervals remove करते हैं जो एक list के अंदर पूरे समा जाएंगे. ठीक है, the interval a comma b is covered by interval c comma d if and only if c is less than equals to a and b is less than equals to d. what does it mean? अगर हमें सपोज यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दिया है, हम इसमें अगर ध्यान से देखें, हमारा जो 3 है उसको मैं लेटस अज्यूम कर लेता हूँ. लेट अस अज्यूम इट लाइक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरवल 2,8 है उसके अंदर ये वाला इंटरवल 3,6 पूरा आ जाएगा. सो वी डोंट नीड दिस इंटरवल टू बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो हम ये वाला जो इंटरवल है इसको जो है इसका काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, वी विल ओनली काउंट दिस वन. ठीक है, ओके, यहाँ पे हाँ ओवरलैप हो सकता है. लाइक देर इज वन क्वेश्चन ऑन लीड कोड मर्ज इंटरवल्स, उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग जितने होते हैं उनको रिमूव करना होता है. बट यहाँ पे जो हमारा रेंज है वो टोटली इनसाइड दैट इंटरवल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 यहाँ पे है लेकिन ये 3 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है. यहाँ पे ओवरलैपिंग से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर एग्जांपल, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपने मर्ज इंटरवल्स किया है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. ठीक है, लेट अस टेक अ एग्जांपल. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज 1,4, देन वी हैव 3,6, then we have 2,8, and then we have 2,9, and then we have 3,7. ओके, हमें ये दिया हुआ है वेक्टर. हमें इसमें से जितने भी ऐसे इंटरवल्स हैं जो ऑलरेडी किसी और इंटरवल्स के अंदर टोटली ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड इज इनसाइड दैट रेंज, देन वी हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इंटरवल. सपोज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें ऐसा कुछ करना है, सो वी नीड टू सॉर्ट दिस वेक्टर, बिकॉज इनको हम सॉर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे इसका लोअर बाउंड 3 है, देन 1 है, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया. सो वी हैव टू सॉर्ट दिस इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, सो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1,4 लिखूंगा. अगर हम नॉर्मल सॉर्टिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सॉर्टिंग करेंगे बेस्ड ऑन द फर्स्ट दिस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी इंटरवल. ठीक है, तो हमारी कुछ सॉर्टिंग इस तरीके से हो जाएगी. ठीक है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंटरवल. बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, देन हम अगर इस पे ट्रेवर्स करते हैं तो हमने 1,4 देखा, हमने देखा कि आवर दिस पॉइंट इज इन द रेंज ऑफ दिस, or we can say we have to compare this with this now, and this with this, and here we can see that 1 is out of range. ठीक है, so we have to include this interval. ठीक है, तो हम इसको रख लेंगे. then we will go back to
दिस 2,8, 2,8 में हमारा जो है 2,8 हमने पुश कर दिया क्योंकि हमारा जो इंटरवल है उसमें 8 तक है, ठीक है। देन कम्स दिस इंटरवल। अब अगर ये इंटरवल आएगा, हमने इसका इससे कंपैरिजन किया, इसका इससे कंपैरिजन किया, हमने पाया कि नाइन्थ इंटरवल नहीं है, देन ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड दिस इंटरवल। बट इससे एक इश्यू हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि 2,9 के इंटरवल के पूरे इंटरवल के अंदर हमारा 2,8 आ रहा है, ठीक है। So instead of sorting like this, we have to change our some sorting algorithm. That is, when we are comparing, ठीक है, we have to sort elements, sort intervals based on what? First, based on first element of interval, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज second element with greater value, second element with greater value in interval should be placed before, should be placed before. So what I want to say this statement, हम जब सॉर्टिंग कर रहे हैं, हमें ये वाला, हम अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो इंटरवल है ना, वी हैव टू सॉर्ट इन सच अ मैनर दैट वी पुट दिस हेयर एंड वी पुट दिस हेयर, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस कुछ ऐसा करना है, ठीक है। और अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा ये जो कुछ इंटरवल्स हैं मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सॉर्टिंग हो जाएगी वो कुछ इस तरीके हो जाएगी, 1,4 का एक हो जाएगा, देन 2,9 का एक इंटरवल हो जाएगा, देन 2,8 का इंटरवल हो जाएगा, देन 3,7 का इंटरवल हो जाएगा, एंड देन 3,6 का इंटरवल हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें थ्रू कंपैरिजन, तो हम देखेंगे कि हमारा ये तो आएगा इंटरवल। अब यहाँ पे 2 तो इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 4 इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमें वी हैव टू इंक्लूड दिस एलिमेंट एज वेल। बट जब हम इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड 9 इज लाइक inside this 9 8 comes, so we will neglect this, okay. Similarly 2 and 7 are less than in this range, we will neglect this, and similarly 3 and 6 is in the side this range, we will neglect this. So our answer will be equals to the size, what we have to return, we have to return the number of remaining intervals, that means the size of the resultant array, and that will be equals to 2. So this is how we have to solve, we have to think. So हमें एक of course sorting function बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग नॉर्मल सॉर्टिंग तो करेंगे, बट हमें एक कंपेयर फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें हम कंपेयर फंक्शन में पास करेंगे हमारा इंटरवल का लेट से इंटरवल ए एंड लेट से अनदर इंटरवल बी, ठीक है। इसमें हम कंपेयर करेंगे इफ हमारा इंटरवल ऑफ का ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है और अगर वो बी का फर्स्ट एलिमेंट है, देन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटर्न sorting based on if a1 is greater than b of 1. Otherwise what we'll do, we will simply return which one is greater, like a0 should be greater than sorry, a1 should be less than a0 should be less than b0. That is how we will sort. Okay, so let's try to
come in the coding implementation of this question. Okay, I'm just okay coming to the coding implementation. What we need to do is we need to first sort this. So what I'll do, I will first sort this intervals dot begin to intervals dot end, and I'm just making some another function compare, which I will define it later. Okay, now we have to store some maximum we have to okay, just a minute. Yeah, we have to store some maximum out of this. So what I'll do, I will if I'm comparing now, I have to make some variable called max end, something like that, in which I will initialize it with -1. I will check if max end is less than the next interval, then we have to update our max end, and we have to count. We don't need to update our vector, we just need to return the number of remaining vectors, so we can just count them. Okay, so we'll initialize our count with 0, and I'll just initialize maxend with -1, and then I'll see maxend will increase to 4, then it will increase to 9. Okay, if it, yeah, so this is how we can count. Let's see the coding implementation. We will understand it here in a better way. So what I'll do, I'll make int maxend, that will I initialize with -1, and I will initialize a count, and for auto interval ampersand in intervals, what I will do, if our max end is less than interval 1, then what I'll do, I will just count them, count plus plus, and I will update my maxend equals to interval, sorry, yeah, interval of 1, and I'll return the count. Okay, I need to make some function compare. So what I'll do, I'll just make a static bool compare function, in which I will pass the interval a and interval b. Okay, and what I'll do, I'll write the condition if a0 is equals to b0, then you simply need to return based on a1 should be greater than b1, otherwise return a0 less than b0. Okay, so let's try to run this. I hope I have written it in a right way. Okay, here you can see it is successfully submitted. Now submit the question. Yeah, it is accepted. I hope you liked the solution. Thank you.